is your day 7, right? Of Windows administration. मेरा कहाँ हो गया यार? And date is 11, 12, 2020. But it's day 8. Day 6, day 7, day 8. Sorry. It's your day 8. Day 7 was Sunday. Day 7 हमारा Sunday था. This is going to work. Sir, only topic days will be counted or even Sunday will be counted? The Sunday is being counted only. Okay. We have 12 days now. Yeah, we can revise on Sunday. Okay, sir. Okay. Now, let's start with day 8. Day 8 के साथ start करते हैं. So now, today. So yesterday we have gone, like the day before yesterday or the Saturday, we have gone through the every sets of work. Day 6 में हम लोगों ने पूरे वर्क ग्रुप के सेक्शंस को देखा. We have also deployed the work group environment. हम लोगों ने work group environment को भी deploy करके देखा into a state over the normal connection, over a single set of connection and over the private connection. एक public connection के ऊपर और एक private connection के ऊपर. And in that we also shared the file. और उसके अंदर हमने file भी share किया in both the section called as public network and called as private network. Public और private network दोनों के ऊपर. In that all the cases we are able to fetch the file on both sections. The second thing that we are going to discuss is our domain environment. जो second thing है जो हम discuss करने जा रहे हैं वो है हमारा domain environment. Before going on any particular things over the domain environment, I want to ask what is domain. Domain environment के ऊपर कुछ भी बात करने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि domain क्या है. Tell me guys. A domain is a unique name किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी वेबसाइट इंटरनेट के ऊपर लाइक गूगल, यूट्यूब, Amazon. Very nice, Ashok. Okay. Next one. Yes, sir. Domain is a unique name of any business, organization, website, anything. For example, Google. Quite well. Very nice. Next one. Yes, sir. It is a unique name of any organization. It means unique name plus extension. Like YouTube है तो YouTube.com तो YouTube unique name हो गया और .com का extension हो गया. Very impressive. Next one. To make the thing uniqueness, domain name. Very nice. Next one. Sir, it is an identity to express. Name of any business, organization, website that exists on internet. Very well, Rajan. Next one. Sir, it is a combination of unique name and extension. Very well. Sir, it is a just name of a business, organization, website, or anything that is over the internet that will be turned off as a domain. Google.com, Amazon.com. Google.com, Google हो गया सर, domain हो गया और .com हो गया सर, extension हो गया. बहुत बढ़िया शुरू. Next one. Domain name or unique address we can say. For this example, YouTube.com. YouTube is the domain. .com is the extension. Very well. Very nice. Next one. Sir, हो गया. सर डोमेन एक डोमेन सर वो होता है जैसे हमारा हमने इंटरनेट पे अपने वो अकाउंट बनाना सर जैसे हमने कोई साइट बनाई तो हम सीधा उसी पे खोलेंगे. तो मतलब ये हम सीधा साइट बनाए सीधा उसी पे खोलेंगे कहने का सेंस क्या है मतलब सर गूगल पे जैसे हमने डोमेन नेम कुछ भी बनाया तो सर .com जैसे हमने lapid.com बनाया
Progress. ठीक है, very nice. Sir, it is an identity to work on it. जो गूगल है वो डोमेन है सर, सॉरी यूनिक नेम है, और जो .com है वो एक्सटेंशन है. बहुत बढ़िया. नेक्स्ट वन. So it seems everyone involved themselves in the division. यहाँ पे एक और भी चीज मेंशन कर सकते हैं ना, इट इज अ जस्ट सेट ऑफ ए नेटवर्क रिसोर्स ग्रुप ऑफ यूजर. वो डोमेन इन्वायरमेंट में आएगा. डोमेन इन्वायरमेंट, वो डोमेन इन्वायरमेंट आएगा. इट इज जस्ट अ सेट ऑफ नेटवर्क वेयर एवरी कंप्यूटर्स और एवरीथिंग्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर. करेक्ट. Okay, sir. वो डोमेन इन्वायरमेंट में आएगा. हम लोग यहाँ पे सिर्फ डोमेन के बारे में बात कर रहे हैं. Domain is an identification that represents something. डोमेन इज That represents something like business and organization, or like something called website. that all the things is going to defined by their name only. The representation of R.N. Srivastava is a name, but R.N. Srivastava is not unique because there is 100 number of people is having the name R.N. Srivastava. That is the thing. HCL is unique. Why? HCL is a name. It is only one in all over the world. HCL एक नाम है जो हर जगह पूरे all over the world में एक ही है. That is called as a domain. So it seems that everyone has involved themselves in the revision. ऐसा लग रहा है कि सारे लोगों ने अपने आप को रिवीजन में इन्वॉल्व किया है. Is that guys? Domain. ऐसा है क्या? थोड़ा पढ़ा है सर. थोड़ा पढ़ा है सर. पढ़ा है नहीं पढ़ा है कि पढ़ा है पता नहीं यार. Very well, guys. So this is what you all spoke about the domain. So domain, it is just a Name. Unique name. name of anything. अब ये यूनिक नेम हो गया किसी भी चीज का. Now the second thing is domain environment. अब हम कह रहे हैं डोमेन इन्वॉल्वमेंट, मतलब नाउ विद द टर्म कॉल्ड एज यूनिक नेम ऑफ एनीथिंग. अब यहाँ पे टर्म है यूनिक नेम ऑफ एनीथिंग और फिर वहीं पे डोमेन इन्वॉल्वमेंट कर रहा है. सो एनीवन कैन टेल मी इन द इन्वॉल्वमेंट व्हाट वी डू. इन्वॉल्वमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, क्या करते हैं इन्वॉल्वमेंट के अंदर? एनीवन? अरे यस और नो कुछ तो बोलिए. नहीं पता है. No sir. तक कुछ नहीं पता. चलो यार ऊपर. तो easily they can identify कि this thing belong to me or this thing doesn't belong to me. ये चीजें मेरे से belong कर रही हैं और ये चीजें मेरे से belong नहीं करती हैं. And they are the person who can say on which point what kind of the chairs need to be assigned, what kind of the things, क्या चीजें कहाँ deliver होंगी, क्या चीजें कहाँ deliver नहीं होंगी. They are the person who differentiate.
वो डिफरेंशिएट करते हैं इन सारी चीजों को। नहीं जा सकता Correct. दोस्त से तो That is called as domain environment, where everything is connected inside a particular name. जहाँ पे एक चीज एक पर्टिकुलर नेम के अंदर कनेक्ट है. That is what kind of zone. इस चीज को कहते हैं डोमेन. समझ में आया? Is this understood? Yes, sir. Any point of the query in the domain environment? Okay, in this just a definition of domain environment. अभी खत्म नहीं हुआ. This is not finished yet. Any set of the query over here? No? Very good. So what it says? A domain environment just a second. यस सर फौजी तो अटक गया सर यार नेट तो नहीं गया ए यार A domain environment is a logical grouping of computers or devices connected to a same or a different distant type of network. A centralized server handle the computer within a domain administration. मतलब कहने का सेंस क्या है कि जो भी सारी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं वो इंटरनेट कनेक्टिविटी का यहाँ बात करें तो वो इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको कहीं से भी मिले. फ्रॉम वेयर यू गेट द इंटरनेट कनेक्टिविटी दैट डजंट मैटर. व्हाट मैटर इज आर यू कनेक्टेड विद द particular inside a particular name that is going to be handled by a centralized server. अगर आपका वो सिस्टम एक पर्टिकुलर नेम के साथ कनेक्टेड है तो वो एक ना एक सेंट्रलाइज सर्वर से मैनेज होगा. मतलब व्हाट डज इट मीन कि यू आर गोइंग टू हैव अ सेंट्रलाइज सर्वर. आपके पास एक सेंट्रलाइज सर्वर होगा. This is going to be your server. Okay. Wired connectivity देने के लिए you will form one you will have one switch. Now for the wired connectivity you are going to have one switch, and with that switch you will have connectivity. Which switch से connect. Guys, some have a check on that. Just allow me for a minute. ऐसी ये राहते होता है हम नहीं हाँ 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 ऐसा क्या हाँ यार सर क्यों अटक जाते हैं यार फटाफट फटाफट शुरू करो यार
going to establish the connectivity in the physical mode with this switch. इस switch से आपके सारी चीजें physical mode पे connected होंगी. इससे कनेक्ट होता है कनेक्ट करना होता. Now is directly connected with the server. ये switch जो है वो directly आपके server से connect होगा. And what the server is going to have? Geo. The server is this is going to be your server, which is going to have the name called HCL.com. जिसके पास HCL.com होगा. Okay. This is it. These are we are going to have one more or two or three more PCs, which is directly establishing the connectivity with the server, which is in home network, जो अपने home के network पे है और वो directly वहाँ से connectivity कर रहा है. So this is on this own set of network, वो अपने set of the network पे है. So that doesn't matter. वो matter नहीं करता है कि from where you belong. आप कहाँ से belong कर रहे हैं, that doesn't matter. The matter is is your PC belongs to that particular name? क्या आपका जो PC है वो particular name के अंदर belong कर रहा है? So yes. Yes. My particular system belong to that name. HCL.com. सर HCL से उन्होंने कहाँ से? हर एक सिस्टम जो है अब वर्क ग्रुप पे नहीं है, नाम के अंदर. Okay. So when they are inside a particular name, you can all see जब वो एक particular name के अंदर है and all the things are going to regulate by that particular server और सारी चीजें जो regulate होंगी वो उस server से regulate होंगी. You want to access internet, that will be done by that server. You want to access any set of the information, that is going to done by the server. आपको कोई भी information access करना है, कोई भी चीज accessibility करनी है, सारी चीजें server के साथ access होंगी. And over here you are going to have one administrator of every PC. आपको एक ही administrator मिलेगा हर एक PC का. Now the person who can log in at PC number 1, आप कोई person अगर PC number 1 पे log in कर पाता है, he can successfully log into 2 3 4 5 6 7 8. वो 2 3 4 5 6 7 8 पर भी log in कर सकता है with his username, with his password. If I say rnsrivastava@hcl.com, rnsrivastava@hcl.com, so rnsrivastava@hcl.com can log in at any PC. Can log in at any PC. It doesn't require any kind of the things. उसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है because whatever the data, whatever the username, whatever the things are getting stored on that server. जो भी username और data है वो सारा server पे store हो रहा है. From the server it is regulating all things. Server से ये सारी चीजें regulate हो रही. That is what it called as domain involved. And what is the structure called? Domain infrastructure. और ये structure क्या कहलाता है? Domain infrastructure. This is the thing that we have. ये चीजें हैं. Understood guys? ये समझ में आया? Yes. Any set of the query? Anyone? कि सर क्या है कैसे? एकदम नहीं समझ पाया. I didn't get any single point. ऐसे भी हैं कोई? Because guys, this is the structure, this is the complete infrastructure that you are going to interact everywhere. यही एक infrastructure होगा जिस infrastructure पे आप हर जगह interact करेंगे. You are going to have at every single place, जो आपको हर एक single place के ऊपर मिलेगा. टोपोलॉजी, ये structure start topology भी कहलाता है. That is the thing we say. Everything is going to regulate by a single server, that called as a single computer, we call it server,
And to go with the physical connectivity, we use hub and switch. Remember that point, guys? The start topology में एक point था कि सारी चीजें एक central server manage करेंगे, central computer जिसको server कहेंगे, और switch और hub को use करेंगे physical connectivity के लिए. That is what it called as. This structure बोलते हैं your start topology. This is what we have discussed. Clear now? समझ में आया? Got it. Now, how we can deploy domain environment? हम लोग कैसे deploy कर सकते हैं domain environment? So how domain environment for deploying domain environment we need few things. अब हमें domain environment deploy करना है तो हमें कुछ चीजों की जरूरत होगी. क्या? First called as one is on first is called as server side. पहला server side. I need active directory. Called as AD. After that I need ADDS. Active directory domain service. After that I want DC. हमें एक और चीज की जरूरत होगी domain controller. I need network operating system called as NOS. इसको NOS कहते हैं. After that I need domain name system, server or service called as DNS. इसको हम DNS कहते हैं. These are the 5 things I needed from the server side. ये 5 चीजें हैं जो हमें server side पे जरूरत पड़ेगी. Client side I just need operating system. Client side पे सिर्फ हमें operating system. इसको बोलते हैं हम लोग client operating system. Clear, guys? इन चीजों की जरूरत है तब हम जाके अपने डोमेन एनवायरनमेंट को डिप्लॉय कर सकते हैं. We need these things. On the basis of what we can deploy the domain environment. That's what it says. ये चीजें ये कहती हैं. समझ में आया? Look guys, if the thing is not clear, if you are unable to understand my example, you can say it frequently. अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, मेरा एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहा है तो आप बता सकते हैं. ऐसा नहीं है. सर ADDS क्या है सर? अभी इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे. पहले यहाँ तक चीजें समझ में. I am going to describe each and every point over the server side as well. Client side को तो पहले डिस्कस कर लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम. We have already discussed the client side, operating system, Windows and all. Okay. So we are going to discuss the server side, every single point. Server side के बारे में हम लोग हर एक single point को discuss करेंगे. Don't worry at all. So till over here, just let me. What is domain infrastructure? What is domain environment? Is this understood? Domain infrastructure क्या होता है? Domain environment क्या होता है? ये समझ में आया? सर. सभी को समझ में आया? Yes sir. Okay. Very nice. Very well. So now let's discuss about the server side. Deploying environment, we need few things. What the server side and the client side. So let's have the discussion over the
सर्वर साइड से डिस्कशन स्टार्ट करें. So first one is